Welcome to Chop Talk Tutorials. You are watching Farman Khan in front of you, and today we are going to discuss the next topic, that is chemical bonding. आज हम chemical bonding में बात करेंगे chemical bond, Lewis symbol और Lewis dot structure, valence electrons, covalent bond, that is single covalent bond, double and triple covalent bond with examples. So let's start. Stay tuned with Chop Talk Tutorials. Chemical bond. The attractive force which holds various constituents, for example atoms, ions or molecules etc. together in different chemical species with a force is known as a chemical bond. एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को एक साथ जोड़ के रखती है, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, लेट कंसीडर वी हैव अ एटम, the second atom. For example, we have a constituent that is positively charged, and second constituent we have that is a negatively charged. So there is always an attraction between positive and negative ones. So this attraction or this attractive force towards each other is known as a chemical bond. Chemical bond, it may be represented as by a line or dot structures that we will study later in Lewis symbols or Lewis dot structures. Now, the Lewis symbol और Lewis dot structure. इससे पढ़ने से पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना पड़ेगा. What are valence electrons? So, electron in outermost shell takes part in chemical combination. These electron in outer shell are known as valence electrons. वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जो outermost shell में प्रेजेंट होते हैं और जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं, जो किसी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. उसके बाद Lewis, an American chemist, introduced a simple notation to represent valence electrons in an atom. These notations are known as Lewis symbols or Lewis dot structures. Lewis एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन केमिस्ट थे, जिन्होंने एक नया सिंपल तरीका निकाला इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का. उसी को Lewis dot structure कहते हैं. For examples, lithium, it contains only one electron in its outermost shell. Beryllium contains 2 electrons in outermost shell. Boron contains 3 electrons in outermost shell. So these electrons are represented by these dots in these atoms. Boron contains 3 electrons. Carbon have 4 electrons. So these 4 electrons are represented by these 4 dots. And these symbols are to be known as Lewis symbols or Lewis dot structures. Now, the covalent bond. The covalent bond, a molecular bond that involves sharing of electron pairs between atoms, is known as a covalent bond. Covalent bond जो बनते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं. There are 3 types of covalent bond, that is single covalent bond, double and triple covalent bond. Now take an example of single covalent bond, that is Cl2. There are a lot of examples present of single covalent bond, but we are taking an example of Cl2. Let's draw the structure of Cl, Lewis dot structure of Cl. As we know, Cl contains 7 electrons in its outermost shell. तो इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. This is the Lewis dot structure of Cl. तो इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयर है. तो ये दोनों Cl आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. सो दिस इज हाउ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन केस ऑफ Cl2. नाउ नेक्स्ट इज CO2, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो वी नो कार्बन हैव 4 electrons in its outermost shell and oxygen contains 6 electrons in its outermost shell. तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन. तो यहां से ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करेगा. सेम विद दिस, एंड दिस इज हाउ CO2 फॉर्म्स, दैट इज, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज this is how the
formation of double bond in case of CO2. Now we will have the dinitrogen or the bond formation of triple covalent bond. नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ती है. तो ये अपने दूसरे नाइट्रोजन साथी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उसके 3 अपने साथ शेयर कर लेगा. सो दिस इज हाउ द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्स इन डाइनाइट्रोजन केस, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज लाइक दिस. We can represent it as Cl2 like this. So this is how the formation of single, double and triple bond occurs in case of sharing of electrons. Now we will discuss the next topics in next video. Thank you. Thanks for watching this video. Handwritten notes are also available for this topic. उसके लिए आपको इस वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा. Friends, please like, share and subscribe for more videos. Stay tuned with Chalk Talk tutorials. Thank you.